Dear students, now we will do some questions from exercise 8.4 trigonometry, and we have completed one first, second, third from the question number 5 in previous days. So now see part 4 of the question number 5. Prove this identity: 1 plus sec a by sec a equal to sin a square by 1 minus cos a. So there is two sides, left hand side and right hand side, and we can solve any side to get other sides. सो सेक ए लाई साइन ए बनाउनु कस ए बनाउनु सजिलो हुन्छ, तर साइन ए कसलाई हामी चेन्ज गर्नु अप्ठ्यारो हुन्छ, लिटल डिफिकल्ट. सो वी राइट हियर लेफ्ट ह्यान्ड साइड से यता 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए. सो व्हाट इज सेक ए? कस को रेसिप्रोकल, कस को उल्टा, दैट मीन्स 1 प्लस सेक ए रिटेन एज 1 बाई कस ए बाई अगेन सेक ए 1 बाई कस ए equal to, take the LCM, otherwise directly we can write here cos a 1 ja cos a plus 1 by cos a divided by this 1 by cos a. So directly we can cancel this cos a. So we have this cos a plus 1, otherwise we can write 1 plus cos a, and we will leave this. After solving this left hand side we are getting 1 plus cos a. Now we solve this right hand side. हामी लेफ्ट हैंड साइड सल्भ गर्दा राइट हैंड साइड पाउन सकेन, सो यतै छोडिदिनु पर्यो. अब राइटपट्टि सल्भ गरेर हामी यसको इक्वल सो गर्नु पर्यो. सो राइट हैंड साइड इज साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कस ए. साइन स्क्वायर ए को फर्मुला के हो? वी नो दिस थिंग, साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. Now sin square a equal to 1 plus होता गएर के हुन्छ minus cos square a. So we write here in the place of sin square a we can put 1 minus cos square a. Important formula, identity number 1, sin square a plus cos square is equal to 1. With the help of this identity we can find out sin square is equal to 1 minus cos square a, and down 1 minus cos a. This 1 minus cos square is written like this, 1 square minus cos square, like this. That means it is the formula a square minus b square. We get in the first bracket a plus b, in the second bracket a minus b. Then 1 minus cos square a, it is a, it is b. So a is 1 plus b is cos a. In the first bracket it is positive, in the second bracket is taking negative. 1 minus cos a by, in the denominator it is 1 minus cos a. So 1 minus cos a, 1 minus cos a cancel, so 1 plus cos a. So let's see here, it is also 1 plus cos a. If we solve this left hand side, and also after solving right hand side we are getting also 1 plus cos a. That means we write here therefore LHS is equal to RHS. It is the solution of the fourth part of the question 5. Now see the sixth part. A square root of 1 plus sin a by 1 minus sin a. Left hand side, right hand side is this sec a plus. So first we solve this. We take here left hand side here, root over 1 plus sin a by 1 minus sin a. What we do here, we rationalize this. Denominator हामीले हेर्नु पर्यो, denominator मा sign change गरिदिनु पर्यो. If it is minus it becomes plus. यो 1 plus sin a multiply र divide दुईटा गर्नु पर्छ. It is the process. If it is plus it becomes minus, and same thing multiply and divide. यस्तो खालको क्वेशन में, बिकज साइन ए कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन्टु कोसेक ए, साइन एलाई चेन्ज गर्नु हुँदैन. सो यो रुट में 1 प्लस साइन ए, रुट में 1 प्लस साइन ए, दैट मीन्स वी राइट 1 प्लस साइन ए. किन दुईटै रुट में छ भने कुनै चीज छ यस्तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मीन्स 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, एन्ड स्क्वायर रुट अफ दिस इज कैंसिल आउट, बी गेट 1 प्लस साइन ए. तल यसको पाउँदैन, यो रुट भित्र के हुन्छ, ए माइनस बी
ए बी हो यो ए बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, formula becomes a square minus b square. So a is 1 square and minus b is sin a square. So it becomes 1 square 1 minus sin square a. So we write here 1 minus sin square a minus b, a plus b, formula a square minus b square. तो 1 को square 1 sin a square sin square a. Now we use here 1 plus sin a by 1 plus sin 1 minus sin square a. This identity sin square a plus cos square a equal to 1, and we need this 1 minus sin square a. So if we write here cos square a, we get 1 minus sin square a. So very important identity, this number 1. sin square a plus cos square a becomes 1. The cos square निकाल्नु पर हामीले के पाउँछ 1 minus sin square a. So in the place of cos square a we write 1 minus sin square a, but here already 1 minus sin square a. So in the place of this we write cos square a equal to this 1 plus sin a, and cos square a is written as 1 minus sin square a 1 minus sin square a cos square a, and cos square this, just see this. No, actually we will not use this because already we have got here cos square a in the square root. So it becomes, it is cos a. Cos square a means cos a into cos a, and the square root is cos a, and it is written as 1 by cos a. 1 को मुनि पनि cos a आउँछ प्लस sin a को मुनि पनि cos a आउँछ. Almost प्रुभ भइसकेको छ. We will not use this formula of the sin square a plus cos square, because cos square a means cos a into cos a, इसको रूट के हुन्छ cos a, and 1 divided by cos a also plus sin a by cos a. It becomes 1 by cos a के हुन्छ sec a plus sin by cos tan a. So it is right hand side, sec a plus tan a. So it has been proved. Now see the part 7. Sin theta minus 2 sin cube theta by 2 cos cube theta minus cos theta equal to tan theta. So first we take here left hand side. Sin theta minus 2 sin cube theta by 2 cos cube theta minus cos theta. अब के गर्नु पर्यो यहाँ अब कमन लिनु पर्यो. यता पनि sin एउटा sin थीटा हो, यो sin 3 वटा छ. त एउटा दिस sin थीटा taken as common. The sin theta common लिँदाखेरि यता पाउँछ 1 sin theta 1 जा sin theta minus 2 sin cube theta. sin 3 टा छ 3 times sin. So 1 sin theta is taken out, so remaining sin square theta will be here by here what is common cos theta. So cos theta here 2 cos cube theta बाट cos theta लिँदा के पाउँछ cos square theta minus cos theta बाट cos theta, cos 1 जा cos theta. So almost our answer is here tan theta, sin by cos tan theta is. त्यसले गर्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइड सल्भ गर्दै गर्दै हेर्दै गर्नु पर्यो नि त आन्सर अर्कै निस्किँदै जान्छ. यहाँ sin by cos tan आयो त, यो हामीले रिमुभ गर्नु पर्ने. सो व्हाट वी डू, यो यसमा जुन छ कुन एउटा यो sin 1 minus 2 sin square theta लाई 2 cos square theta minus 1 बनाउनु या 2 cos square theta minus 1 लाई यो टर्म बनाउन ट्राई गर्नुपर्छ. बोथ अप्सन्स हियर. इफ यू ट्राई टू चेन्ज दिस, it is 1 minus 2 sin square theta by it is cos theta. If someone can change this cos square theta, so we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So if we try to change this cos square theta, so cos square theta equal to के हुन्छ 1 प्लस होता गएर के हुन्छ माइनस sin square theta. कसरी यो sin square theta लाई 1 minus cos square theta पनि लेख्न सक्छ, बट वी चेन्ज एनी वान. यो चेन्ज गर्दा यो पाइहाल्छ. सो
2 cos स्क्वायर थीटा को प्लेस में के चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस माइनस 1 सो ये साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई इट इज cos थीटा हियर 2 1 जा 2 माइनस ये 2 को 1 में मल्टीप्लाई हुन्छ 2 1 जा 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा दिस माइनस 1 now here sin theta 1 minus 2 as it is 2 sin square theta by cos theta and here this 2 minus 1 we get 1 2 but 1 घटाउँदा के पाए 1 minus 2 sin square theta so we got same terms you cancel भयो so sin by cos it is tan theta and this is equal to right hand side it is proved. So now see this part 8 sin a plus cosec a square plus cos a plus sec a whole square equal to 7 plus tan square plus cot square a. अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिएर हामी राइट हैंड प्रूफ गर्नुपर्छ सो इट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू sin a plus cosec a square plus it is cos a plus sec a whole square we need actually 7 निकाल्नु पर्छ तब a plus b को होल स्क्वायर हामीले यहाँ युज गर्नु पर्यो इट इज b दिस आल्सो a and b a plus b को होल स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर a plus 2 into sin a into cosec a plus b होल स्क्वायर a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर so 2 into a is sin a into b is cosec a plus तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स कोसेक a स्क्वायर के हुन्छ कोसेक स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a नाउ नेक्स्ट this bracket cos a plus sec a just like same a square that means cos square a plus 2 into cos a into sec a cos a into sec a plus b square means sec square a केही गरेको छैन जस्ट we have to do using a plus b whole square now and which formula we are getting here now see here sin square a plus cos square a right here sin square a plus cos square a sin square a plus cos square a plus 2 into this sin is converted to 1 by cosec sin a को उल्टा के हो cosec a this into cosec a plus this cosec square a plus this has been finished here 2 cos a को उल्टा 1 by sec a reciprocal into sec a plus last is sec square अदरवाइज हामीले या त साइन ए लेखेर कोसेक एक उल्टा के हुन्छ 1 बाई साइन ए पनि गर्नु सक्छ चेक वन्स अगेन साइन स्क्वायर ए कस स्क्वायर ए यहाँ लियो हामीले एन्ड दिस 2 into साइन ए रेसिप्रोकल 1 बाई कोसेक ए into कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस दिस कस स्क्वायर इज हियर अलरेडी टेकन 2 into कोसेक उल्टा 1 बाई सेक into सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए सो कोसेक ए कैंसिल दिस सेक ए कैंसिल and sin square theta plus cos square theta it is getting 1 plus 2 1 ja 2 plus cosec square a plus 2 1 ja 2 plus sec square a. So we have got here 1 plus 2 3 3 plus 2 5 but we need 7. So let's check 1 plus 2 plus once again we use cosec square a identity minus cot square a is equal to 1 and we need cosec square a so cosec square a written as 1 plus cot square a so in the place of cosec square a we write 1 plus cot square a ये 2 लाई 2 सार दियो sec square a identity sec square a minus tan square a identity number second minus tan square is equal to 1 in the place of sec square a
what we write? 1 plus tan square a. So in the place of sec square a we write 1 plus tan square. The identity याद छ भने quickly हामीले यो गरिहाल्छ. So now see here, 1 plus 2, 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7 plus tan square a plus cot square a. This equal to right hand side. So with the help of these solutions, you have to do remaining parts of this question number 5. Okay, thank you.